Hello students, in previous lecture we discussed about the syllabus of VLSI design, course outcomes, books we will use for VLSI design in current semester, evaluation process for your internal marks and importance of the subject. In this lecture 1, we will discuss about the introduction to VLSI, advancement in VLSI and Moore's law. Okay, so let's start with the introduction to VLSI. VLSI stands for very large scale integration. Okay, so whenever we talk about this term integration, means we are talking about the integrated circuit. Okay, so large number of components we want to implant on a single circuit. Okay, so this stands for large number of transistor, large number of components on a single IC. Okay, so there is a huge change in electronic industries over the last decades, mainly due to advancement in integration technologies and large scale system design. Okay, so whenever we talk about this integration technologies, we are talking about the reducing the size of the transistor. Okay, and the wire length between two components, we can also reduce this. So these are the technologies to increase the capacity of a integrated circuit. Okay. Like if I talk about the 1970s, the transistor size was 10 micrometer. So at that time technology was named 10 micrometer. Okay, further we reduce the transistor size 3 micrometer, then 1.5, 1, 0.5, 0.25, and after that we come to 180 nanometer. Then also again we reduce the 65, 32, 28, 20, 14. Now right now we are working on the nearby 10 nanometer. So you can see the change, 10 micrometer to 10 nanometer. Okay, so second point, the use of integrated circuit in high performance computing, means here we are talking about the application where we are using the VLSI. Okay, so first one is the your high computing, next telecommunication, multimedia, signal processing, speech and video processing, consumer electronics. Everywhere we are using this VLSI technology. Because हम अगर बात करें अपने होम अप्लायंसेस की, like your AC, cooler, washing machine, in each we are using integrated circuit. That is the power of the VLSI. And यही रीज़न था इसलिए VLSI इस VLSI में इतना एडवांसमेंट हुआ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, we can understand this point with the help of this figure 1. आप यहाँ देख सकते हैं, on x axis years and on y axis industry trends. You can say that कि कहाँ कहाँ पे हम VLSI यूज़ कर रहे हैं, किस किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं. So in 1970 mainly we use for mainframe computers. Okay, when we forward to 1980s, VLSI
were using for personal computers also and consumer electronics. Okay, see the change. Okay, so basically this is showing the everywhere we are using VLSI for every application. Whenever you have required a single electronic circuit, okay, so there will be always a integrated circuit, there will be always a VLSI. So these are the some domain where we are using the VLSI: consumer electronics, portable computers, data communication, multimedia application, wireless, speech processing, video on demand. Okay, so everywhere. Suppose you want to play video, so for playing video you have required a hardware, and whenever we talk about the hardware, there will be a integrated circuit. Okay, so now further moving, this is a table. It is showing the how the number of transistors are going to increase. Okay, in 1958 researchers used single transistor. Okay, after that 1960 one transistor, 1962 2 to 4 transistor. Okay, logic blocks. 1964 5 to 20. Now here comes the 1967 medium scale integration, MSI. Okay, so in that was using 20 to 200 logic blocks per chip. On a single chip we are using 20 to 200 only. Okay, in large scale integration 1972 200 to 2000. You can see the increasing the number of blocks per chip. Okay, so VLSI came in 1978 and the block range were 2000 to 20,000. Okay, so whenever we talk about the logic blocks, means obviously these blocks were made with the some transistors. Okay, so this is the scaling of the logic blocks per chip. Okay, so further we move. Benefits of the monolithic integration means what are the benefits of the integrated circuits. Okay, so first one is the less area, okay, volume and therefore compactness. Okay, so okay, let's take one example. If we have one circuit, okay, let's see, this is a कन्वर्टर. ठीक है, कोई भी एक कन्वर्टर ले लिया हमने एक. सो जब हम कन्वर्टर की बात करते हैं तो कन्वर्टर के सर्किट्स में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो सपोज एक कंपोनेंट हमने यहाँ प्लांट किया और एक कंपोनेंट यहाँ प्लांट किया, और इसका जो साइज है, ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर साइज है, लेट्स सी दिस इज 10 माइक्रोमीटर. ओके, सेम फॉर दिस ट्रांजिस्टर आल्सो कंपोनेंट. ओके, सो अगर हम इस 10 नैनोमीटर को रिड्यूस कर दें, सॉरी 10 माइक्रोमीटर को रिड्यूस कर दें 10 नैनोमीटर से, 10 नैनोमीटर, तो क्या होगा, जो ये साइज ले रहा था आपका, ये क्या होगा,
ये रिड्यूस हो जाएगा, ओके क्या हो जाएगा, ओके सो वेट, ओके सो यहाँ पे जो साइज था ये क्या हो गया, इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, इसका भी साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आपका सर्किट डिजाइन हो रहा था उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड। अगर हम साइज ट्रांजिस्टर का रिड्यूस कर देंगे तो ओवरऑल जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो VLSI हमें क्या देता है, लेस एरिया, ओके क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहे हैं ट्रांजिस्टर का, हमारी कोशिश क्या है कि साइज हम ट्रांजिस्टर का रिड्यूस करें, सर्किट हमारा कॉम्पैक्ट होता जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस पावर कंजम्पशन, ओके VLSI हमें क्या देती है, एक फ्रीडम देती है, ठीक है, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन विच वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। सो अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर काउंट कम कर लेंगे तो क्या होगा, जो पावर कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लेस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एट सिस्टम लेवल, कि जब हम अपना VLSI सर्किट डिज़ाइन करते हैं, IC फैब्रिकेट करते हैं, ठीक है, सो उस टाइम क्या होता है, हम सारी अपना जो भी प्लानिंग है वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड करते हैं, तो जो टेस्टिंग होती है उसके लिए भी हमें क्या कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एट द सिस्टम लेवल पे। इट गिव्स द हाई रिलायबिलिटी, हायर स्पीड, ओके, हायर स्पीड ड्यू टू सिग्निफिकेंट रिड्यूस इंटरकनेक्शन लेंथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो कंपोनेंट के बीच में हम जो वायर की लेंथ है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट, वो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, कम लगेगा मीन्स डिले विल बी कम, स्पीड विल बी हाई, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। ऑब्वियसली अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रिड्यूस कर देते हैं, लेस पावर कंजम्पशन है, एरिया हमारा कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर एरिया कम है मीन्स हार्डवेयर वी आर यूजिंग लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। सो दीज वर दी सम बेनिफिट फॉर monolithic integration or integrated IC. Further moving, advancement in VLSI. Okay, here you are showing two picture. This is the first one. Okay, in first one you can see this is the 5 MB memory storage device designed by IBM in 1956, and the cost was $10,000 per MB. Okay, in second figure you can see their passport size hard disk with memory capacity is 4 terabyte. Okay, so see the difference from 1956 to 2020. This is the advancement in VLSI. Okay, further you can see this is the first computer designed by Charles Babbage in 1823, and this is the current scenario. See the change. Okay, see this is the personal computer, so this is change. Okay, this is achieved only by VLSI. Okay, there are another example with Apple. Apple designed this computer in 1976, and see this is a design MacBook in 2011.
Okay. Further moving, Moore's law. According to Moore's law, the number of counts, the number of transistor on a single chip or on a single integrated circuit has been double within 18 to 24 months. Okay, so means in every 1.5 or 2 years the number of counts of the transistor is going to double. Okay, so for example, in 1981 we used, let's say, 10,000. Okay, so after 2 years it will be 20,000. Okay. So how this is going to change the VLSI. Okay, you can see here on x-axis years and y-axis on number of transistor. Okay, so see here, in 1970 Intel design, okay, processor with count 1000. In 1972 it will be 5000, more than just double, 5 times. Okay, so see, this is increasing. Okay, let's wait for 1 minute. Okay, so see how it is increasing. Okay, so most of you know the processor. Okay, everyone using your laptop, desktop and mobile phone. Okay, so see the advancement. Okay, so whenever we go towards to high performance, the number of count is increases. Okay, so this is the Moore's law. According to Moore's theory, the number of count of the transistor will be doubled within 18 to 24 months. Okay, so student, this is all about your first lecture. In second lecture we will start with the CMOS transistor. Okay, so thank you students.